देख रहे हैं डीडी कशर, एहसास कश्मीर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बा उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत चुनते हैं और उन पे गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा ब्रिजिंग लर्निंग गैप्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लर्निंग गैप्स गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पैदा होते हैं और कौन से इकदाम हम उठा सकते हैं इन लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमान खुसूसी से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिया मकबूल। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। थैंक यू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ चंद मेहमानान और मौजूद हैं, आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा अक्सा शबीर। आप स्टूडेंट हैं मास कॉम और जर्नलिज्म के वुमेंस कॉलेज से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम शाहिद बिलाल। आप स्टूडेंट हैं अमर सिंह कॉलेज के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अदनान। आप स्टूडेंट हैं वुमेंस कॉलेज के। और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हिनात। आप स्टूडेंट हैं वुमेंस कॉलेज के, आप कर रहे हैं मास कॉम और जर्नलिज्म। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले मैं आपको खुशामद करती हूँ चूँकि आप हमारे मरकज़ी मेहमान हैं। शुरुआत आपसे ही करेंगे। चूँकि आप बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो आपका सामना उन स्टूडेंट से भी होता होगा जिन्होंने अपनी तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की है, और कुछ ऐसे तलबा से भी आपका सामना होता होगा जिन्होंने अपनी तालीम प्राइवेट स्कूल से हासिल की है। तो क्या लगता है आपको लर्निंग गैप जो है वो ये क्यों पैदा हुई है, और जो आप जब आप इनसे सामना करते तो कहाँ पे आपको डिफरेंस लगता है, कहाँ पे हम बेहतरी ला सकते हैं? ओके, जहाँ तक ये मौजू है लर्निंग गैप्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लर्नर्स, तो हम बात करें कि पहले इसको हमें फाउंडेशन स्टेज पे देखना है। ओके, सो वेयर वी फाइंड द स्टूडेंट्स एट द फाउंडेशन लेवल, एट द प्रिपरेटरी लेवल, वी नीड टू एड्रेस द सिचुएशन इन दैट वेरी स्टेज। तो हम जब बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, पहले हम आ जाएंगे कि जो पॉलिसी है, जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स है, जो ब्रॉडर प्रोग्राम्स है, जो we frame the policies, that is somewhere centralized. Okay, but then after, if we see the context in India, we find that dual education is there. Either one of the system is run by the private institution and second one by the government. So we find ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का ड्यूअल आ रहा है, वहाँ पे हमें देखना है कि पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, प्रोग्राम्स, हायर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेम, बट we then shift to the execution aspect. We then come to the initiation, where we go with the management particularly, where the things are now initiated. So we find here, to make the programs, to make the policies in practice, we need the things that require infrastructure. We need the budgetary component we need to touch. We should go with the skill-oriented teachers. We need to have the platform where we frame the system. Okay, so once we find a gap, I do believe that this gap may be because of the reforms that are not given the good initiative into the practice. And the gap is there because we find maybe the teachers who are directly related with the teaching learning process, they are not giving the time to have the self growth to reach the maximum growth,
and plus the monitoring and evaluation is one of the component, and one of the component I feel it that it is the parental support or the community service to give them a sort of ownership where they can have the direct involvement, which we find in one sect. So to bridge the gap, we need to explore the issues first. To explore the issues first, we should go with this very equity. Is the execution going through the equity aspects? Is the execution going through the infrastructure that is intact? Okay, so I do believe that these are the issues that we need to address. Then only we can fix, first to explore the gap, then only we can fix the gap. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी ओर आते हैं अक्सा जी. चूंकि आपने अपना 10th जो है प्राइवेट स्कूल से वहाँ से तालीम हासिल की, एंड देन आफ्टर आपने 11th 12th एक सरकारी स्कूल से आपने तालीम हासिल की है, तो कहाँ पे आपको जो डिफरेंस है वो लग रही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम पे बुलाया. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या होता है, 10th तक की बात करेंगे, वहाँ पे जो टीचर्स है उतने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाते हैं. इफ़ वी विल टॉक अबाउट आफ्टर 11th, तो टीचर्स आर डूइंग गुड, वेरी गुड. दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर एंट्रेंसेस एंड अदर एग्जाम्स. बट 10th तक की बात करेंगे, आई फील कि उधर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे टीचर्स उतना फोकस नहीं कर पाते हैं बच्चे पे, और शायद मे भी उनके पास बजट नहीं होगा या इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई फील कि जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं, टीचर होता है 1-on-1 अटेंशन देता है स्टूडेंट पे. स्टूडेंट में उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो उनके पेरेंट्स से कंटैक्ट करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. लेकिन जो प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर्स है, वहाँ मैंने ऐसे देखा कि उधर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है कि टीचर्स, पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ बात करना चाहते हैं लेकिन टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं. या बेसिक जो होती है हमारे प्राइवेट स्कूल्स में, तो प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करो या कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं. वो मुझे लगा हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में अभी लैक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम आपको कम्युनिकेशन के लिए उतना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, या आपका जो स्टेज फोबिया होता है वो हमारा मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल्स में ही जो है ख़त्म हो जाता है रादर देन गवर्नमेंट स्कूल्स. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? मेरा सवाल मैम से ये रहेगा कि आपने खुद पढ़ाया है, आपने खुद देखा होगा कॉलेज में जो प्राइवेट स्कूल से आते हैं और गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उनकी जो नॉलेज है उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. जो प्राइवेट स्कूल से जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर डूइंग गुड, दे डू हैव गुड बेसिक नॉलेज जो उनको होनी चाहिए रादर देन गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स से. उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है. डू यू थिंक कि हमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को क्लस्टर, एक दोनों को आपस में मिला के जो है काम करना चाहिए? इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग गुड इन प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा करा है, गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी नहीं है, डू यू थिंक कि हमें जो है उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ले जाना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से उसका जो है फ्यूचर बना सके? बहुत अच्छा सवाल है. जहाँ तक हम इस सवाल के जवाब में हम ऐसा कर सकते हैं कि there is a term which the different policies have given timely. We find there is the network and collaboration where we can find the best practices or the teachers who are having the good hold or are having the good experience, that they can hold the newly recruited or struggling teachers. So these best practices to share, to collaborate, to go with the teamwork, to go with the team teaching. It's not only to share the teamly teaching aspects, but to share the different infrastructure that is available. So we can by these very ways, in collaborative and network ways, or we can have the mentorship where we find some extraordinary or specialized or expertise in the teaching learning process. They can handle the struggling teachers. So these practices can give the good outcomes and results that we are expecting from the performance of the students. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी ओर आते हैं शाहिद साहब. आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? बट माई सेल्फ, मतलब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस गैदर करूँ, आई हैव सीन मेजर माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, दे हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर माइंड ब्लोइंग. मतलब वहाँ के टीचर्स, मतलब हमें इतना पता है कि कितना एक टीचर हार्ड वर्क करता है देन फॉर गोइंग फॉर अ government school and getting permanent over there. So we know that he is completely on a different level than other teachers because he has given those sacrifices.
سو ڈونٹ مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر مطلب اتنا زیادہ ایجوکیشن لیول ہونے کے بعد بھی مطلب ایک ٹیچر جو اپنا میجورٹی آف دا ٹائم ٹیچنگ میں دے رہا ہے اینڈ آفٹر دیٹ گورنمنٹ از ریکاگنائزنگ ہم, مطلب بہت زیادہ ریسپیکٹ کی بات ہوتی ہے, اینڈ آفٹر دیٹ ہی گوز ٹو اے گڈ گورنمنٹ اسکول اینڈ ٹیکس اے گڈ اماؤنٹ آف سیلری فرام دا گورنمنٹ. بٹ پھر وہاں پہ یہی کوشچن آ جاتا ہے کہ وائی آر اسٹوڈنٹس لیکنگ دین, مطلب وہاں پہ ہے مائنورٹیز دے آر ڈوئنگ گڈ, بٹ کیوں مطلب وہاں پہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس آر ناٹ ڈوئنگ گڈ. از دیٹ اے لیک آف پریزنس آف ٹیچر؟ آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. مطلب اگر ٹیچر اپنا کام نہیں کر رہا ہے دین وائی آر دا مائنورٹیز ڈوئنگ بیٹر. ایسا نہیں ہے کہ مطلب مائنورٹیز کچھ ایسے ہوں گے جو بھی گورنمنٹ اسکول جاتا ہے. آئی ہوپ دیر آر ٹو ریزنس. فرسٹ, یا تو وہ پرائیویٹ سیکٹرس کی وہ فی افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب آئی ایگری میجورٹی آف دا تھنگز دیٹ مائی کولیگ ہیئر سیڈ کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ملتا ہے, اسٹیج ملتا ہے, بٹ وہ چیزیں وہاں پہ بھی ملتی ہیں ہم لوگوں کو. گورنمنٹ سیکٹرز میں تو شاید سے زیادہ ہی ملتی ہے. وہاں پہ ہم لوگ کو ملٹی نیشنل جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں, اگر گورنمنٹ کوئی چیز پرووائڈ کرتی ہے, اناؤنس کرتی ہے اینی ایونٹس, وہاں پہ سب سے پہلے گورنمنٹ اسکولس کے بچے ہوتے ہیں. سو اس سب کے بعد بھی یہ کلیم کرنا کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے آر ناٹ مطلب on that scale or not that much educated, I don't believe that's the point here. So آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ how can these misunderstandings get cleared؟ کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ مطلب جتنا بھی میں نے سنا, مطلب everybody is thinking کہ گورنمنٹ اسکول کے بچے are not capable of doing anything, but that's a complete misunderstanding. So how will you clear that? اوکے, جہاں تک ہم بچوں کی بات کریں, if we talk about the students who are at the foundation stage, we believe in the constructive approach in the sense that we don't believe that now a student is a plain slate and our teacher is here to come up and write everything what he wants and molds. But we believe the student-centered education nowadays that has been given due importance by NEP 2020 recent policy, a very comprehensive document. So we find that every individual is unique. Every individual is exclusively unique in himself. اور تو اس بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں, دیر از اے ڈیمانڈ آف پرسنلائزڈ انسٹرکشنز دیٹ ایوری اسٹوڈنٹ ریکوائر اے اسپیسیفک ٹائپ آف انسٹرکشنز. that one of the student is good in memorizing, second is good in creativity, third is good in understanding. So we as a teacher should address the we can say the diverged faculties of the students. So on that very call, we should take the classroom as an inclusive one, where in inclusive way we need to address the diversity of the students. Once the diversity of the students are addressed, we will value each and every student, and once we are valuing every student, everyone will feel respect, and with this very respect everyone will feel and celebrate his or her uniqueness. So this is not the concern that we can generalize that government school students are not good and private school students are not good. No, here we should believe that there is an approach of learning where we need to make the students to explore the things on their own, then make them to get engaged with the things, then to elaborate the things, and then go with the evaluation of the things. Once these 5E model or 7E models are in the practice, we find the good performance and outcomes from the students, because it is not like that this is not good and this is good. We believe in the multiple intelligence nowadays. It's not only the cognitive, a particular faculty is addressed. No, we believe that a number of faculties having the different domains of personality, a teacher or in teaching learning process, we need to address each and every faculty so that we can have a good achievement or scholastic or academic achievement in our schools. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. عدنان صاحب آپ کی اور آتے ہیں, چونکہ میم نے بھی ابھی بات کی این ای پی 2020 کی. حالانکہ ہم نے این ای پی 2020 پہ ایک پروگرام آلریڈی کیا ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس پالیسی کی تو کافی زیادہ اس کے جو آبجیکٹس ہے بینیفیشل ہے ایجوکیشن سسٹم کے لیے. یہاں پہ جب ہم لرننگ گیپ کی بات کریں گے تو اس کو کم کرنے کے لیے این ای پی 2020 پالیسی کا کیا رول رہتا ہے؟ جی میرے خیال سے این ای پی 2020 کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں گیپ کو کم کرنے کی بٹوین پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, سو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے پہلا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن, دوسرا ہم بات کریں گے فنڈنگ کی,
کیونکہ بعد میں وہ پھر انفراسٹرکچر چاہے پھر ہماری جو فیسلٹیز ہے اسٹوڈنٹس کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے. اور تیسرا ہے ہمارا اسکل سیٹ. ایک اسٹوڈنٹ جو پاس آؤٹ ہوتا ہے, چاہے پھر وہ اسکول سے پاس آؤٹ ہو, چاہے پھر وہ کالج سے پاس آؤٹ ہو, اس کے لیے صرف ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے. آج کے دور میں اس کو ریئل لائف کے لیے ریڈی ہونا, ریئل ورلڈ کے لیے ریڈی ہونا وہ بہت ضروری ہے. اور این ای پی نے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا ہے. پہلے ہم بات کریں گے جو کوالٹی ہے اکارڈنگ ٹو این ای پی وہ کافی امپروو کی گئی ہے. جو اس کے بعد ہم بات کریں گے جو میں نے ابھی بات کی فنڈنگ کی, جو گورنمنٹ نے اس بار ڈیسیجن لیا ہے اکارڈنگ ٹو این ای پی 2020 کہ 6% آف دا جی ڈی پی ول بی گرانٹیڈ ٹو ایجوکیشن. اس کو بیٹر کرنے کے لیے 6% جو ہے جی ڈی پی وہ گورنمنٹ یوز کرے گی صرف ایجوکیشن سیکٹر پہ, تاکہ ایجوکیشن جو ہماری ہے وہ بیٹر ہو. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی گورنمنٹ اسکولس ہوں گے, جو بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ہوں گے, ان کا ہمارے پاس ایک بیٹر انفراسٹرکچر ملے گا, بیٹر لیبارٹریز ملے گی, بیٹر لائبریریز ملے گی. اس کے علاوہ جو بھی ہمیں اکوپمنٹس ہے, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ کلاسز کی, اسمارٹ بورڈز کی, تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو اویلیبل ہوں گے. اس سے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی جو لرننگ ہے وہ کافی حد تک بیٹر ہوگی. اور بات کی میں نے ووکیشنل لرننگ کی, جو کہ اس بار سکھایا جا رہا ہے ہر ایک انسٹیٹیوشن میں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو. اکارڈنگ ٹو این ای پی جب اسٹوڈنٹ 6th کلاس میں 6th گریڈ میں آئے گا تو اس کو سکھائی جائے گی کوڈنگ. کوڈنگ ابھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں. پھر جب وہ اس کے علاوہ کوڈنگ کے علاوہ سکھایا جائے گا ان کو باقی جو امپورٹنٹ اسکل سیٹس ہے, جیسے ہم بات کرتے ہیں پلمبنگ, کارپینٹر, یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اسکل سیٹس, اسکل اورینٹڈ کورسز پرووائڈ کیے گئے. فوکس نہیں کیا جائے گا اکیڈمکس پہ, بلکہ ایک پراپر اس کو ایک اسکل سیٹ دیا جائے گا جس کی بیسس پہ جب وہ انشاءاللہ پھر پاس آؤٹ ہوگا, چاہے وہ اسکول سے چاہے وہ کالج سے, اس کو اپنی جو لائف ہے اس کو سروائیو کرنے میں, اس کو جینے میں کوئی مطلب ہارڈ شپس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہی ول بی ریڈی فار دا ریئل ورلڈ. اس کے پاس وہ اسکلس ہوں گے, وہ نالج ہوگی, وہ ایجوکیشن ہوگی کہ جس کی بیسس پہ وہ اپنا ایک جاب ڈھونڈ سکتا ہے, اپنا ایک کام کر سکتا ہے. اور یہ جو گیپ ہے اس طریقے سے ہم دھیرے دھیرے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرائیویٹ اسکول سے اسٹوڈنٹس باہر آتے ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, زیادہ اسکلفل ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹر اپارچونیٹیز ہوتی ہے. جبکہ ہم بات کرتے تھے کہ این ای پی 2020 سے پہلے تک کی, کہ جب گورنمنٹ اسکول سے اسٹوڈنٹس آتے تھے اور جب وہ فیس کرتے تھے پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ کافی لیک کرتے تھے ان سے, چاہے وہ ہم اسکلس کی بات کریں, ان کی کانفیڈنس کی بات کریں, ہم ان کی لینگویج کی بات کریں, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ کافی گیپ دکھتا تھا ہمیں پرائیویٹ اسکولس میں اور گورنمنٹ اسکولس میں. لیکن این ای پی 2020 کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک وہ گیپ کم ہوا ہے. اور اس ٹائم دونوں جو ہے, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو, بوتھ آر دا سیم لیول, دونوں کا لیول سیم ہے, دونوں کا کانفیڈنس سیم ہے. ایون اسکلس ڈے بائی ڈے بیٹر ہو رہی ہے, چاہے پھر وہ ایون میں کہوں گا کہ گورنمنٹ اسکولس کے جو اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں ان کی اسکلس زیادہ بیٹر ہو رہی ہے کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس سے. اور یہ ہمیں ایک چھوٹا سا ایگزامپل اسی سال ہمیں دیکھنے کو ملا, جو 12th اور 10th بورڈ کے ریزلٹس تھے. جو 10th بورڈ کے ہم بات کریں تو ٹاپ 10 پوزیشنز جو تھی وہ گورنمنٹ اسکولس کی تھی, اور اگر ہم بات کریں 12th میں بھی تو ریشو جو تھا گورنمنٹ اسکولس کی پوزیشنز کا وہ بہت زیادہ ہے تھا کمپیئر ٹو پرائیویٹ اسکولس. بالکل, اور آپ نے ایک صحیح بات کی کہ ابھی کا جو جاب مارکیٹ ہے وہ اسکلس کو ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک, تو آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ میم, جو این ای پی 2020 میں ریفارمس لائے گئے ہیں, میں مینلی فوکس کروں گا جو اسکلس کے ریلیٹڈ ریفارمس لائے گئے, کیونکہ اکیڈمکس پہ تو ہم اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے تھے, لیکن 2020 این ای پی میں بات کی گئی ہے ووکیشنل لرننگ کی, جو اسکلس سکھائی جاتی ہے, چاہے ہم کوڈنگ کی بات کریں یا میں نے بات کی تھی پلمبنگ کی, الیکٹریشین, یا باقی ایسی کوئی بھی اسکل سیٹ جس کو عام طور پہ چاہے JNK میں ہو یا چاہے انڈیا میں ہو یا ایشیا میں ہو کافی نیچی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان ساری جابس کو. لیکن این ای پی 2020 نے ان کو کمپلسری کر دیا ہے اپنے اس این ای پی 2020 میں. تو میم میرا سوال یہ رہے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا امپیکٹ پڑے گا ایک اسٹوڈنٹ پہ, اس کی لرننگ پہ, اور اس کی جو اسکل سیٹس ہے وہ کتنی زیادہ ڈیولپنگ ہوگی اس سے؟ بہت اچھا سوال ہے. جہاں ہم نیپ کی بات کریں, نیپ 2020 اٹس ویری کمپریہنسو ڈاکیومنٹ, and this document has come after 34 means 3 decades, and
the policy is so much comprehensive and deep, and where the focus has been given to the holistic development of the child. जैसे हम अभी बात कर रहे थे, maybe some decades before we were just focusing on a particular faculty or a particular type of potential in a child, but the time has come where we need to give the recognition, we need to give a good label to the diversity. Okay, so before some years, if these skills or these vocation sets were taken as a lighter mode, that we will find that no, this is doing plumbing and this is not recognized anywhere, but the policy has given the recognition to each and every course, to each and every vocation field. So जहाँ तक skills की बात करें, NEP has talked about the soft skills and hard skills. जहाँ तक vocations की बात करें, definitely these are actually the life skills, where we find the man-making education is likewise, where the education is not only related with just to go with the bookish through or in academic way, but to explore the things in such a way that you will be self-reliant, you are self-dependent, okay, and that is actually what education meant in real sense. So NEP to a larger extent has given the field to the number of to cater the diversity in the field, to cater the different faculties of the students, तो उस हिसाब से to make the survival in a respectable and valuing way. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर आते हैं हिनात साहिबा, आपका क्या सवाल रहेगा जो आपके जहन में हमारे एक्सपर्ट के लिए? जैसा कि हम सब एजुकेशन सिस्टम की ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड वी नो वी आर इन कश्मीर एंड एवरीवेयर, जैसा कि ये जो एजुकेशन गैप है ये हर गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के दरमियान देखने को मिलती है। जो मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द गैप बिटवीन एजुकेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स? जैसे हमने पहले ही बात की कि gap is not in the policy. Policies are there same, okay? The broader objectives to get accomplished are the same, but the execution part is somewhere where we find the lag, okay? So the gap we find that resources where we need to add, where we need to create a more system, more comprehensive system that is monitored periodically or that is monitored continuously, where we need to evaluate the prevailing situations, and plus we need to cater the needs of different resources that are directly or indirectly related with the teaching learning process. For example, we are having the human resource, and first in our mind comes the teacher while we talk about the teaching learning process. So teachers, we need to focus on the teacher, we need to focus on the capacity building of the teacher, and we do find the good role which has been highlighted by the NEP 2022. We have the DITES, we have SCRTs, we have these NCRTs, we have NCT, a good organizations where we find the different programs that are catering the professional development needs. So professionalism and professionality upgradation, we need to revital the teachers so that to relate with the present scenario, to relate with the present situation, they need to upgrade themselves. No doubt their experience, they are having the good experience in terms of chronological way or in years, but to upgrade themselves in the leveraging technology to be in relation with the prevailings, we need to update them. So we need to create certain जब नेप के अंडर हम बहुत सारे सैनिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे इट्स फ्री टू मेक टीचर्स प्रोफेशनली इम्प्रूव्ड, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का रोल रहेगा कि स्टूडेंट्स के मोटिवेशन पे असर हो जाएगा. वी विल बी एबल टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स वंस वी आर डूइंग गुड टू मोटिवेट एंड एक्सेलरेट द स्टूडेंट्स. डेफिनेटली वी कैन लीड देम टू हैव द गुड चेंज इन द बिहेवियर. सो वी कैन this can to a large extent bridge the gap and where we find the divide. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की, जैसे शाहिद साहब ने अभी बात की कि जो गवर्नमेंट टीचर होता है पहले वो एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, यानी उसमें उतनी नॉलेज होती है पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं. क्या यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है?
डेफिनेटली जैसे हम पेडागोजी की बात करें, मेथोडोलॉजी की बात करें, डेफिनेटली मेथोडोलॉजी और ट्रांजैक्शन और इंस्ट्रक्शंस की जो बात करें, दैट्स हैविंग अ गुड इन्फ्लुएंस अपॉन द वी कैन से टू मेक द गुड अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स. जब हम टीचिंग मेथड की बात करें, मे बी सम डेकेड्स बिफोर वी वर रिलाइंग ऑन अ पर्टिकुलर मेथड, बट नाउअडेज देयर इज डाइवर्सिटी इन द मेथड्स. जैसे हमने अभी बताया कि वी नीड टू गो विद personalized learning methods where we need to address the learning needs and styles of the student, and we need to make the students to grow on their own pace. The time should be given to a particular student that he will explore in as per his own pace, the quanta, the energy or the faculty that is present in him. And at the same time, with different exposure to the different technologies and different innovations and different research come up, that we should switch from traditional or convergence teaching methodology to the divergent or the update methodology, where we find the blended learning should be an approach, where we should mix the traditional and the new method, where we should go with the flipped classroom, where in earlier days teacher comes with good preparation and delivers with it, but at the same time we find it flipped, that teacher is given material to the students earlier and then there is discussion going on in the students, where we do find the gaps and problems. And one more is that we should believe in the critical thinking ways, where we should boost the thinking aptitude among the students, where we should use the inquiry based models, where we should give them the hand-on experiences like that of experiential learning. We should believe in the constructive approach of learning, give them the field to discover on their own. So methodology is having a good whole to motivate and to explore the best in the students and get the good results. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और भी कुछ आपके साथ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है. आप सब मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमें और हमारे नाज़रीन को देने के लिए. नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.